Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. Welcome to another class. Today we are solving this paper, and this one is by 0620, paper 22 for IGCSE chemistry. Alright, so I've shared the link with you guys, so you guys can definitely start there. Okay, no, Sharik, I did not have another background today, but that's perfectly fine. Yesterday, actually, that was the day humans first set foot on moon, so that's why my background was the one on moon yesterday. So just small things that we are appreciating, remembering. The paper today is paper 22, just coming back to that. So without further ado, let's just start. Okay. Just give me a minute, I need to set this up. Okay, so this is the paper that we're going to do. If you guys have any question, oh god, where did it go? Yeah, here we go. So if you have any question, feel free to put them on YouTube, and I will be answering them as we do this paper. Let me open that on the side. Yeah. So this is MCQ paper, the most recent paper that we have had, May mein to paper hua hi nahi. So this is the one that we are going to do, and a few instructions that I want you to look at. For example, you need to take good erasers with you. It's very important that you do that. Similarly, you will be given the bubble sheet. I've already shared one bubble sheet with you. So when you're practicing, make sure that you solve it over there and just erase it. If there's a problem, there's a question that you feel like, acha mere galat ho gaya, just erase it. That's perfectly fine. Fill the box that is there. Don't put tick marks, don't circle it, just fill that box there. And it's also important that until you're absolutely sure of it, don't make such a dark mark कि बाद में कंप्यूटर जब उसको चेक कर रहा हो तो कंप्यूटर को लगे कि दो आंसर्स हैं, बिकॉज दो आंसर्स जब होंगे तो you will definitely unfortunately lose those marks for it. Okay, and we don't want that certainly. Okay, so let's start with this paper. This is pretty easy, paper 2, and not that difficult honestly. So I think most of you should be able to do it. If there's a problem, अभी हम उनको resolve कर लेंगे. You will get 40 questions. O-level people have 1 hour. IGCSE people have 45 minutes for that, and you can choose A, B, C, D. You know the drill. So every question has 1 mark, so it's really important that you do. One thing that I would ask you to do when you go into the paper is tear that periodic table out. So take the periodic table at the end of the paper, take this one out. For example, if you scroll down to the end of this paper, you will see that you have a periodic table. So that is one copy that you have there, and when you're practicing, make sure that you use this one. This is the official periodic table given by Cambridge that we will be using, and you will be using that. So make sure that you make a copy of this whenever you're practicing and you're using that one. The format of this paper is, this periodic table is that the symbol is given, the name of the element is given, the atomic mass is at the bottom, and the atomic number is at the top of the symbol, which means all the elements are arranged in terms of the proton number as they are in the
periodic table. So it's really easy to navigate this one. So there are useful information that is given over here. Also, this is not mass number that is given. So one hint that you can use is look at chlorine. It's 35.5. Then that means you're given the MR, not mass number, which is perfectly fine. We don't need mass number in general. We just need the periodic table, the MR values if we are trying to calculate mass of compounds and all that. You will also notice that you have been given these blank sheets of page number 17, page number 18, and page number 19. They're all blank sheets over here. So in some papers they give you more blank paper, in a few they give you less. इनका मकसद क्या होता है? They are there for you to do your rough work. So make sure that when you're solving them, when you're solving the paper, you have to make sure that you use these rough sheets, and you will see as I solve the paper, okay, the paper is yours. Examiner is not going to look at it. The paper is given to you in the exam paper so that you can do anything that you need to do on it. So ये मत सोचें कि पेपर को नीट करना है या पेपर को किसी ने देखना है. Nobody is going to bother with that. Whatever you do, the scratch work that you do on the paper, it's yours. Make sure that you make it yours. It should have your mark on it. So इसलिए आप उसके ऊपर चीज़ों को underline करें, highlight करें. All of that is going to be quite useful for you guys because the paper is yours. Alright, so let's not delay anymore. Let's start with this. Which row about a change of state is correct? So change of state हो रही है. We know there are 6 changes of state and the 7th one is evaporation that we talk about. So change of state कौन सी है, उसमें energy change क्या है और उसका नाम क्या है. 3 चीज़ें हैं हमारे पास. So solid, liquid, gas. Remember that you have changes from any state can change into any of them, and you need to remember that this is endothermic. Okay, so solid to liquid means that it is getting more energy, liquid to gas means it's getting more energy, and the backwards way would be exothermic. Similarly, this one is endothermic. It is going to take more energy for solid to change to gas. Okay, the sublimation process. So पहली बात तो ये हम देख लेते हैं. Solid to liquid we know heat is taken in, ये गलत हो गया. So वहीं पे लिख लें उसको. Gas to liquid, heat taken in का मतलब है it is endothermic. Gas to liquid, gas has high energy, liquid has low energy, so ये भी गलत हो गया. ठीक है. Solid to gas, that is sublimation. ये नाम हमारे पास ठीक आ गया. And heat is taken in, yes it is, because gas has high energy. So both of them is correct. C is our answer. That's it. Liquid to solid, उसका नाम ही उसने गलत दे दिया है. ठीक है. Liquid to solid में ये ठीक है, ये नाम गलत है. It is not condensation. Liquid to solid is freezing. Alright, moving on. Gases are separated from liquid air by fractional distillation. Okay. For this, I need you to remember what gases are there. So we have the highest constituent is nitrogen, then we have oxygen, then we have argon, and then we have other gases like carbon dioxide. So that order you need to remember this, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं. अच्छा, अब ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली गलत कर देते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में. So let's see how to solve this question. So gases are separated from liquid air by fractional distillation. The boiling points are given. Which gas is monatomic? So you have one condition that it should be monatomic. फॉरन स्कैन करें अपनी लिस्ट को. नाइट्रोजन नहीं हो सकता. डी इज गॉन. ओके, लिक्विड एट -200. लिक्विड एट -200 का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास नंबर लाइन होगी और यहाँ पे -200 होता है, देन व्हाट दिस शुड मीन इज दैट माय बॉइलिंग पॉइंट शुड बी ऑन दिस साइड. ठीक है, इस साइड पर बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए सो दैट इट्स अ लिक्विड, और मेल्टिंग पॉइंट इस साइड पे होना चाहिए. यहाँ पे हमें सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, सो वी कैन इग्नोर द मेल्टिंग पॉइंट थिंग. अब यू हैव मेड दिस नंबर लाइन, यू नोटिस दैट दिस इज द पॉजिटिव साइड, नंबर्स आर इंक्रीजिंग ओवर हेयर. सो इसके लिए आपने क्या करना है, ऑल यू गोटा डू इज मेक श्योर दैट यू पुट द नंबर्स हेयर. सो -186 दैट इज आर्गॉन, वो इस साइड पे आएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. अच्छा, हीलियम इस साइड पे आएगा, नियॉन इसी साइड पे आएगा. डजेंट मैटर पहले आए बाद में आए, ये आपका सी है. तो आप देख लो कि विच वन इज लिक्विड एट -200. ठीक है. सो आप देख लो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट इस साइड पर है, दैट इज योर आंसर, दैट इज द थिंग दैट्स गोइंग टू बी अ लिक्विड. सो दैट क्लियरली इज ए. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? आई डोंट थिंक के होने चाहिए कोई भी. ऑलराइट. So there are a couple of questions, so I'll answer those as we move on. So first question, are group 2 hydroxides insoluble or what? Group 2 hydroxides actually show a trend. सच बोलूँ तो they do show a trend, और वो सारे के सारे insoluble भी नहीं होते और सारे के सारे soluble भी नहीं होते.
O levels है IGCSE के लिए, you just need to remember that they're insoluble and calcium hydroxide is the one that you're going to take as soluble. ओके, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लाइटली सॉल्युबल, उसको आप इस तरह से सोच लो, और बाकी सब जो हैं वो आपके पास उनको आप इस तरह से देख लें कि दे आर नॉट सॉल्युबल. ओके, सो दैट्स इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दैट. Okay. Second question that somebody had was for group 2 oxides. Oxides insoluble हैं, वो हमारे पास पता है हमें. Snap oxides are soluble, बाकी insoluble हैं. Concepts that are not in O level 5070 and those that are in IGCSE, I will let you know whenever we encounter such a thing. I will let you know that this is not for O levels, this is for just IGCSE. Okay, so don't worry about it. All right, moving on. Okay, two different food colorings, X and Y, are tested using chromatography. Okay, so we have chromatography here. 3 pure dyes, 1, 2, and 3 are tested. So how do you know it's a pure thing? Because you see there's only one spot here. The chromatogram is shown. Which statement is correct? Let's see. Chromatography में क्या ज़हन में रखना होता है आपने? Chromatography में horizontal line test आपने देखना होता है. तो अगर मैं for example die 2 देखना चाहता हूँ किसमें, तो एक horizontal line यहाँ पे बनाओ. It goes through X and Y, so दोनों में die 2 मौजूद है, because die 2 has just one spot and that is present in both of them. So that is how you know. That is how you know which sample has which of the dyes. Horizontal line test is what you need. Unless they ask you कि नहीं आप इसका RF value calculate करके दो, वो हम अभी देखते हैं कि कैसे करेंगे. So X and Y both contain 2 or more dyes. Let's see. X and Y both contain dye 2. Yes, that is true. But the second one, the other one, in fact, they are not there. So अगर मैं just to show आप देखोगे कि dye 3 is available in this one and dye 1 is not available in any whether X or Y. So this tells me that this is wrong. X and Y both contain just one dye and उसके ज़्यादा अभी देख लेते हैं बल्कि. X and Y both contain 2 or more dyes. X and Y both have dye 2 and they both have dye 3. So yeah, this statement is right. My bad. Dyes 2 and 3 are present in both X and Y. Let's see. Dyes 2 is present in X and Y. Dye 3 is also present in X and Y. This statement is also right. The RF of dye 1 is 0.625. 0.625 RF वैल्यू को आपने 100% से मल्टीप्लाई करना है, you get 62.5. जिसका मतलब क्या है कि आपके टोटल का ये 62.5% कवर करना चाहिए या 6.25 पे होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 100% की बजाय लेंथ ऑफ दिस पेपर इफ आई मल्टीप्लाई बाय दैट देन आई गेट 6.25. तो दिस मार्क शुड बी एट 6.25. यहाँ पर करके मार्क होना चाहिए because that's the RF value. It is not there, so this one is wrong. So that tells me my answer is 1 and 2 only. All right. Okay. All right, moving on. Oh, wait a minute. आप RF वैल्यू अगर आपको ये पेपर में गिवन है तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें नहीं मल्टीप्लाई करना, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें मेजरमेंट करनी. कैसे करेंगे? व्हाट यूल डू इज़ यूल टेक दिस डाई and you'll measure the distance from here to here, which is 5 point whatever, and then you'll divide it by the total distance to the solvent front. पेपर की लेंथ से नहीं करना. I don't know, I thought कि ये solvent front ही है, my bad. So you just divide this by total length. So for example this one I assume is at 5 and the total length is 8. So जो भी वो value आती है 5 divided by 8 is 66, yeah, 0.625. So this one is also right. Yes, again. Sorry about this. So 1, 2 and 3 should be our answer. Which statement about the atoms of all the isotopes of carbon is correct? Let's see. Isotopes of carbon. Carbon के हमारे पास वैसे तो 3 isotopes हैं, but you don't need to remember that. You just need to remember कि carbon का carbon 12 is the stable one, carbon 14 is the radioactive one. ठीक है? So as an example, for radioactive elements, you just need to know. Then this is carbon 14 is radioactive and carbon 12 is not. So ये कह रहे कि they are all radioactive. This statement is wrong. Next, they have the same mass. अगर same mass है तो isotope कैसे है? That goes against the definition of isotope.
They have the same number of neutrons, again goes against the definition of the isotope. They have the same number of electrons in the outer shell. Of course, it's carbon, the atom and the electronic structure is going to be the same. So this one is correct. Yes, Sharik, I mistakenly uploaded paper 1's link earlier on. We are doing paper 2 because paper 1 is just कोर सिलेबस बहुत बेसिक होता है. पेपर 1 में आपके 100% भी आ जाएँ तो आपके ग्रेड C बनता है for IGCSE. So this one is paper 2, which is more in line or aligned to the syllabus of O levels and also the extended syllabus for chemistry, IGCSE. Alright, which diagram represent the structure of silicon 4 oxide? अब मुझे नहीं पता silicon 4 oxide क्या है, मुझे उसके बारे में एक फैक्ट याद करना है. Silicon 4 oxide has the same structure as diamond, और diamond का structure है ये, graphite का structure है ये हमारे सामने. This is some ionic compound. I do not know which one, but it's an ionic compound. How do I know it's a compound? Because the dots are of different colors. You'll notice that in A and B the dots are the same color, which means they are an element. So ये दोनों element हैं और ये दोनों compound हैं. ठीक है, अब उनमें से किसका structure diamond जैसे है? D का. So D is my answer. ठीक है, I do not need to know exactly वो कहाँ से आया कैसे आया. The only thing I need to know is silicon 4 oxide is a compound with same structure as diamond. That's a fact. I need to remember it. Alright. Lithium and fluorine. जैसे आप इनको देखोगे, you need to remember कि lithium is a metal, fluorine is a non-metal. They react to form lithium fluoride. Obviously, that is going to have ionic bond because metal and non-metal. A student writes 3 statements about the reaction. Alright. Lithium is a metal, so when it reacts, it's going to do oxidation, it's going to lose electrons. Fluorine is going to take electrons, it's going to undergo reduction. Lithium atoms lose an electron when they react. This an electron tells me that it's in group 1, which lithium is, so this statement is right. Each fluoride ion has one more electron than a fluorine atom. Fluoride ion is obviously, मैंने आपको बताया था कि how do you know which thing has how many electrons more than the other thing. So in the periodic table, if fluorine is over here and neon is over here, when fluorine takes an electron, it moves one step forward. Its electronic configuration is same as neon, जो कि हर कोई element चाहता है when they react. So that means fluoride has the same configuration as neon, and fluorine has one less electron than that. Obviously, क्योंकि उसने एक electron gain किया तो fluoride बना. So this statement is also correct. Lithium fluoride is a mixture of elements. This is a key word. Mixture is wrong. The word we are looking for over here is compound. So they will switch these keywords, और exam में वो आपके साथ इस तरह से करेगा कि they will use same definition that you have been used to, but वो keyword उसमें switch कर देगा. जैसे आपके सामने एक example है कि उसने compound use कर लिया. इसी तरह एक और example अगर मैं दूँ तो they might say okay, graphite and diamond are compounds of carbon. So that is again a wrong statement because they are just that element. वो compounds है ही नहीं, वो उसमें होता ही सिर्फ carbon है. So these keywords are important when you're looking for statements, whether they're true or false. You need to look for these keywords. So this one is wrong. Lithium fluoride is not a mixture, it is a compound. So you can see over here in 6 our A and first and second statement is correct. There's a question that is there a difference between nucleons and neutrons? Yes, nucleons is anything that is in the nucleus, and neutron is just one particle that you have in the nucleus. You have neutrons and you have protons. So आपके पास सिर्फ उसमें न्यूट्रॉन की बात हो तो न्यूट्रॉन है, वरना न्यूक्लियन में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों आ जाते हैं. ओके, ऑलराइट, moving on. How many electrons are used to form covalent bonds in a molecule of methanol? How do you know that? First thing you need to know, इसका स्ट्रक्चर बना लें. मेथनॉल है, कार्बन से स्टार्ट करें. इसको रीड कैसे करते हैं? स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड. लेट्स से यू हैव कार्बन, ओके, इट हैज़ 3 हाइड्रोजन टू इट, सो 3 हाइड्रोजन्स. इट हैज़ 1 O, ओके, एंड देन O दैट देन हैज़ H. सो आपके पास ये बन गया. अब इसको ज़रा काउंट करते हैं. द बॉन्ड्स, रिमेंबर दीज लाइन्स शो 1 पेयर. एक लाइन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया. तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग जो है वो इस तरह से हो रही है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक उसका. ऑब्वियसली कार्बन के बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट आई एम जस्ट शोइंग 1 पेयर एज इट्स बॉन्डेड. सो दिस इज़ 1 2 3 4 and 5. So 5
pairs that you have. So 5 pairs का मतलब क्या है कि उसके पास उसने पूछा है how many electrons, that is 10 electrons, because 5 pairs is 10 electrons. So that's how you know. You draw the structure, count the lines, and those lines tell you कि कितने pairs हैं. You multiply it by 2 to get the actual number. Alright, magnesium oxide has a high melting point. Okay, why would it have a high melting point? फ़ौरन उसको relate करना है strong forces के साथ, ठीक है? वो फोर्सेस कौन सी हैं वो डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड में बॉन्डिंग कौन सी है. अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है तो दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इफ़ यू हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग देन दैट इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्स. और अगर आपके पास जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है तो दैट इज़ जस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वी डोंट गिव इट अ सेपरेट नेम. इन मेटेलिक बॉन्डिंग ऑब्वियसली इट्स अगैन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Okay, carbon dioxide has a low melting point. Again, why? Because weak force. कौन सी? Weak intermolecular force of attraction, IMFA. You know this. Which identifies the attractive forces that are broken when these compounds are melted. Remember that you're going to first look at the forces that you have, and then you're going to look at the particles that make these things. So magnesium oxide is ionic and carbon dioxide is molecular. So that means the forces that you're overcoming in magnesium oxide, they are between ions, and in carbon dioxide they are between molecules. Remember, they are between molecules, they are not inside a molecule. So carbon dioxide के बीच में जो एक molecule और दूसरे molecule के बीच में forces हैं, those are the ones that are being broken. So let's see, magnesium oxide we are looking for attraction between ions, yes, not molecules. In carbon dioxide, so अब A और B तो हमने ignore कर देना. In carbon dioxide we are looking for weak attraction between molecules. So yeah, this is our answer. Okay, so 8 का आंसर हमारे पास D आ गया. Any questions on this? If you have any question, feel free to post them here. Alright, the ionic half equation for the formation of oxygen during the electrolysis of aluminium oxide is shown. बहुत लंबी स्टेटमेंट है, इसको ब्रेक डाउन कर लें. जब आप इसको पढ़ें कि आपको वो बता रहा है बेसिकली कि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन किया जा रहा है. Sorry about this. Yeah, so we are going to have X oxide that is given off, that is discharge, और discharge का मतलब है कि उसने electrons lose कर दिए. वो कह रहा है कि इसको balance करें. So balance करना बड़ा आसान है. You just need to look at two things. Number one, how many atoms do you need? So you have 2 here, so it should be 2 oxide ions breaking down to make oxygen. Secondly, just multiply these numbers. 2 times 2 minus means कि total charge that it has lost, that is -4. So इसका मतलब है इसको 4 electrons lose करने. Another way of looking at this is that one oxide has gained 2 extra electrons, right? So when it goes back to become an atom, it's going to lose 2 electrons each. So that is how you know. So it's very important that you know how to balance electrons. Many students, unfortunately, they just balance the atoms, not the electrons, but you need to remember कि एग्जामिनर को भी ये बात पता है. तो you need to balance the charges when you're taking this. For example, अगर आपसे कहा जाए that you have this equation Al3 plus and electrons and they're making aluminium, or aluminium discharge हो रहा है यहाँ पे aluminium ion. So how will you do this? So again you have to remember that one aluminium ion lost 3 electrons. So when it's going to become an atom, it's going to gain those 3 electrons back, and that's it. So that is important that whenever you are making an equation like this, you need to remember. Another equation that I can give you is S2 minus, and for some reason, let's suppose it breaks down, it gives away electrons and forms S8. Although S8 आपके सिलेबस में उसका स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, लेकिन अगर कभी आ जाए तो उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि देयर हैव बीन क्वेश्चन विद एग्जामिनर हैज सेड दैट ओके सल्फर एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स ऑफ 8 और सल्फर हैज़ एन MR ऑफ 256. सो आपको याद नहीं करना है, लेकिन अगर वो आपको इस तरह के क्वेश्चन दे देता है तो आपने सरप्राइज भी नहीं होना. सो हाउ डू वी बैलेंस दिस? हमें नहीं पता सल्फर का क्या स्ट्रक्चर है, हमें ज़रूरत ही नहीं है. वी जस्ट नीड टू बैलेंस द एटम्स फर्स्ट. सो वी हैव 8 सल्फर हेयर, सो 8 सल्फाइड. And then we balance the charges. So 1 loses 2, so 8 will lose 16, and there you go, 16 electrons. So that is probably the toughest example that they can give you for a question like this. Alright, a compound has formula XF2. इसका मतलब क्या है? F का हमें पता है -1 होता है, so इसका +2 होगा. Remember the charge flip method that we talked about? So it has a relative mass of 70, so you have MR 70. Okay, with what is the element X? So अब इसको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है. एक तरीका क्या है जो थोड़ा सा लंबा मेथड होगा,
आप गैलियम का प्रोटॉन नंबर देखते हो, मास नंबर देखते हो, और आप उसमें ऐड करके देखते हो कि अच्छा ये 70 बना कि नहीं बना। फिर आप जर्मेनियम का ऐड करोगे, देखोगे 70 बना है कि नहीं बना, सल्फर का, टर्बियम का, सबका करोगे, यू विल सी। द अदर मेथड इज यू सिंपली फिगर आउट कि देखें जी x+2 फ्लोरीन मेक्स 70, so fluorine का I know is 19, so that is going to give me x equals to 70 minus 38. So मैं देख लेता हूँ कि 70 minus 38 मुझे 32 देता है. So 32 जिसका भी यहाँ पर mass number है, that is my answer. Okay, so it doesn't matter what option you need to choose as long as it's matching this 32. ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा दैट वेन एवर यू हैव दिस. अब इसमें अगेन अगर आपको उसने बोला होता कि दिस इज़ अ मॉलिक्यूल दैट हैज़ 8 इन इट और समथिंग लाइक दैट, तब हम उसको यूज़ करते, लेकिन अभी हमें नहीं बताया ना उसने, तो वी विल नॉट टेक केयर अबाउट दैट, विल सिंपली इग्नोर इट कि वो 8 हैं, 10 हैं, कितने हैं उसके अंदर. तो यहाँ पे जिसका भी 32 आपके मैथ्स नंबर पीरियोडिक टेबल में है वो आपने चूज़ कर देना. ठीक है, सो दैट्स प्रीटी ईजी. The diagram shows the structure of an overhead power cable. So you have this, you have ceramic there, you have steel there, aluminum there. Interesting. Which statement explains why a particular substance is used? Okay, ceramic क्यों use करेंगे? Because we don't want it to conduct electricity. Okay, and why wouldn't we use? Why would we use steel and aluminum? Because we need it to conduct electricity. Why will we not have it in pure steel? Probably because it's more expensive or it can react with air or rust अगर pure steel होगा. Aluminium rust नहीं करता इतनी easily, so maybe that is a reason why we do that. और steel heavy भी बहुत ज़्यादा होता है, aluminium is much lighter. So let's see, 11. Aluminium has a low density and is a good conductor of electricity. That statement is true, but let's figure this other one out. Ceramic is a good conductor, it's a bad conductor. Steel can rust in damp air. Steel, अगर हमारे पास stainless steel है तो it won't rust, and here we do not have that information कि stainless steel है कि नहीं है, तो this is a little vague. हम इसको अभी तक confirm नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको गलत भी नहीं कह सकते हैं. Steel is more dense than aluminium. Again we do not know the density of this steel, के हमें नहीं पता कि कौन से वाली है. Secondly, अगर let's suppose ये statement ठीक है, हमें कहते हैं कि अच्छा उसने कहा तो नहीं है stainless steel है, तो ये तो बात ठीक हो गई ना कि steel can rust, तो कोई in their right mind will they use it to conduct electricity or wires? It is more of a disadvantage of using steel. Similarly, D is also a disadvantage of using steel. Even if the statement is correct, let's suppose ये दोनों statement correct हैं, they are still disadvantages. They are not why a particular substance is used. So that means this is true and this is also what fulfills the purpose of using them in overhead power cable. So इस वजह से A हमारा आंसर होगा. C और D ठीक हैं भी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. During the electrolysis of dilute sulfuric acid, hydrogen is collected at the cathode. Okay, so यहाँ पर मैं आपको इसे फिर रिवाइज करवा देता हूँ. Then whenever you have dilute solution, that means hydrogen is going to go, and on the other side you are going to get oxygen, because water break down करता है, water discharge होता है, water में से जो आयंस होते हैं वो discharge होते हैं. और अगर आपके पास concentrated है, फॉर एग्जाम्पल एसिड है, तो एसिड ब्रेक डाउन करेगा. सो HCl का अगर कॉन्सेंट्रेटेड का करते हैं तो आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगी. अगर आपको कोई भी चीज़ इस तरह से मिलती है विच इज़ कॉन्सेंट्रेटेड और वो आपसे यूजुअली एसिड का ही पूछता है, तो यू आर गोइंग टू गेट हेलोजन देयर. और अगर डाइल्यूट है तो यू आर गोइंग टू गेट ऑक्सीजन देयर. हाइड्रोक्साइड विल ब्रेक डाउन. what is the half equation for this reaction? For this you just need to remember हाइड्रोजन कलेक्ट हो रही है तो H2 बनना चाहिए. So H2 के लिए you need 2 hydrogen ions, and that means you need to give them 2 electrons. So without even looking at an option, we can find the one that makes hydrogen gas. This one makes hydrogen gas, this makes hydrogen gas, but problem is that this is the one where H positive is gaining electrons. So this is our answer, C. We do not need D because D में तो वो lose कर रहा है. ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन ने लूज़ कर दिए इलेक्ट्रॉन, उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं फर्दर लूज़ करने के लिए. सो दैट इज़ वाई दैट्स नॉट द आंसर. क्वेश्चन इज वाई वॉन्ट 8 बी C? 8 will not be C because C said that there is strong attraction between ions of magnesium oxide and there is weak attraction between atoms in carbon dioxide. Remember, carbon dioxide is a covalent compound, which means that it has a strong covalent bonding between those atoms, carbon and oxygen. So those strong electrostatic forces between the shared electrons
and the nucleus, they are there, they are strong, and they are not affected by any physical process. It's the intermolecular force of attraction that is affected by these physical processes like melting or boiling and all that. So that's why it can't be C. All right. Which row describes an endothermic reaction? Endothermic में हमें पता है कि start में energy कम होती है, end पे energy ज़्यादा हो जाती है. So that means our options are restricted to now B and D. A and C are exothermic. ये नहीं हो सकता. Now let's see. It says energy is transferred from the surroundings to the reaction. So energy absorb हो रही है ना, reaction ने energy absorb करनी है. So इसका मतलब है B is going to, it is explaining endothermic reactions the best. ठीक है. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास आंसर में sorry about that, हमें आंसर में नज़र आ रहा है कि B is explaining the endothermic reaction as well as showing the correct graph. तो that is the answer. अगर ये क्वेश्चन एक्सोथर्मिक के बारे में होता तो फिर हम चूज़ करते C, बिकॉज C में ग्राफ भी बिल्कुल ठीक है, शुरू में एनर्जी ज़्यादा है, बाद में एनर्जी कम है, और द सराउंडिंग्स आर गेटिंग मोर एनर्जी एंड रिएक्शन इज लूजिंग दैट एनर्जी. Alright. The equation for complete combustion of methane is shown. So we have that. Bond energies are shown. What is the energy change for the reaction? This is a question that is usually asked in IGCSE, but there has been one instance at least in O levels जब उन्होंने ये question पूछा था. So हम इसको कैसे कर सकते हैं? We first have to create the molecules. So CH4 and O2, and there are two of them. Okay. So these are the bonds broken. Okay. So this is the positive thing. And then you have CO2, उसका structure बना लें, and you have water, which is H and OH, and you have two of them. And these are the bonds that are made. Okay. This is exothermic, that is broken, that is endothermic. So what do I have to do? Just count bonds कितनी हैं. So 4 carbon hydrogen bonds हैं, उनको तोड़ा है. 2 carbon oxygen double bonds हैं और इनको उसने जोड़ा है, यानी कि बनाया है. This is going to be negative. OH bonds, you have 2 in one molecule and you have 2 molecules, so total 4. So you have 4 of these being made. And oxygen bonds, there's 1 in one molecule and you have 2 molecules, so there are 2 of them that are being broken. So just multiply these numbers. So 410 times 4, 805 times minus 2, 460 times minus 4, and oxygen times 2. Add this all up, whatever your answer is, that is going to give you whatever it's going to be. Okay? So it's pretty simple, you just calculate and add this all up. Okay. Hydrogen fuel cell can be used to power cars. Okay. Which statement about a fuel cell are correct? Fuel cell में क्या होता है? Fuel cell में you take hydrogen and oxygen as raw material, you burn them, you do a reaction, redox reaction on them, and you get water as the byproduct, as well as heat given, energy given off as electricity, which is then used. So balanced equation for this reaction, एक side से hydrogen आ रही है, दूसरी side से oxygen आ रही है. So which one, so those are the fuels, right? So I think this statement, the first one, should be correct कि आपके पास balanced equation for the reaction. इसमें एक problem है. When hydrogen comes in, it's not burnt. So this equation is for combustion. Here we are not providing heat. We are actually using fuel cell to produce electricity. So electricity के लिए तो आपको ions चाहिए. So hydrogen is actually converted to hydrogen ions, and then those hydrogen ions are reacted with hydroxide ions that are made from oxygen. So ये equation combustion की है. So ये ठीक नहीं है. We need ions because that is the reaction that's actually happening. Okay. Fuel cell generates electricity. Obviously, any cell generates electricity. In the fuel cell, hydrogen is reduced. Hydrogen actually goes to become hydrogen ion. You don't need to know the full equations of fuel cell. And I'm giving you caution on this. There are notes that I've seen for students जिसमें बहुत डिटेल होती है कि fuel cell in acidic condition, fuel cell in basic conditions और उनकी equations and all that. You don't need them. You just need to know कि hydrogen ion बनाएगी, oxygen से hydroxide ions बनेंगे, उनको combine करके water बनाएगा, and in the meanwhile you are producing electricity. That's all. That's the working of fuel cell. उसकी diagram तक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. So if I say this one is wrong, reactants are gases at room temperature. Yes, you are going to get hydrogen and oxygen. So they are gases. So 2 and 4 is correct. So I think that will be C. Okay. All right. Okay.
All right, so no more questions so far. Moving on. Apparatus shown is used to measure the rate of reaction, which equation represents a reaction where the rate can be measured. Notice, इस diagram में क्या है? इस diagram में gas syringe है. That means gas volume से हम rate measure कर रहे हैं. So we need an equation जहाँ पे gas produce हो रही है. वो एक ही है. Done. ठीक है. और कहीं पे भी ऐसा नहीं है. इसका रेट ऑफ रिएक्शन आप नहीं मेजर कर सकते इसके थ्रू, बिकॉज गैस नहीं है. इसके लिए पीएच चेंज हो रही है तो पीएच को यूज़ करना पड़ेगा, पीएच मीटर और समथिंग. अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें सॉलिड प्रोड्यूस हो रहा है. तो सॉलिड को इस तरह के क्वेश्चन में यूजुअली वो क्या करता है कि वो नीचे क्रॉस मार्क लगता है और कहता है जी कि इसको रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि सॉलिड बनेगा, दिस क्रॉस मार्क विल बी इनविजिबल, तो सॉलिड बनते हुए हम ये देख सकते हैं. सेम फॉर दिस वन. लेकिन इसमें एक और भी चीज़ हो सकती है कि आपके पास ये ब्रोमीन ब्राउन कलर की है तो वो चेंज हो रही है. वैसे भी ये सॉलिड्स के रिएक्शन है, तो ये हमें नज़र भी ज़्यादा विजिबली मतलब आ जाते हैं कि सोडियम सारा यूज़ हो गया और ब्रोमीन नहीं हुआ एंड ऑल दैट. सो यू आर गोइंग टू ऐड सम सॉलिड, सो अगेन क्रॉस मार्क मेथड विल बी बेटर. दिस मेथड दैट वन दे हैव ड्रॉन, इसमें गैस सिरिंज यूज़ हो रही है, उसका मतलब है गैस कलेक्ट करें. Alright, P is a hydrated metal salt. So hydrated metal salt का मतलब है it has water crystallization in it with a blue color. Blue color, अब आपके जहन में तो कॉपर 2 सल्फेट आएगा. हो सकता है ये कॉपर 2 सल्फेट हो सकता है ये ना हो. आपने उसके ऊपर फिक्स नहीं हो जाना कि नहीं ये कॉपर ही है, लेकिन आपको ये पता चल गया कि ट्रांजिशन मेटल है. इस क्वेश्चन में तो ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है ट्रांजिशन मेटल ना होने की, बट अगर कोई ऑप्शन होती तो यू वुड हैव सिमिलरली रिजेक्टेड इट कि ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए बिकॉज ब्लू कलर आ गया. When P is heated, water is given off, leaving solid Q. Okay, solid Q का मतलब है it is anhydrous. R is a hydrated metal salt with pink color. So pink color हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है. एक हमने pink color पढ़ा है solid copper के लिए, प्योर कॉपर एलिमेंट, वो सॉल्ट नहीं होता. दूसरा हमने पिंक कलर पढ़ा है कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर के लिए, जो कि वाटर का टेस्ट होता है. सो ये दोनों इनफैक्ट वाटर के ही तो टेस्ट हैं कि कलर चेंज हो रहा है. तो हमें विच रो गिव्स द नेम ऑफ पी. P is the original salt that you had, जो कि पहले ब्लू था और बाद में उसका कोई और कलर होगा, वाटर चले गया. एंड देन कलर ऑफ S. S क्या है? S is the final salt that you have. Okay, the one that was made after R is heated. ठीक है. सो आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना कि वो आर जो है वो हाइड्रेटेड है और ऐसे नहीं है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. सो पी इज़ कॉपर 2 सल्फेट, वी नो इट. और पी का कलर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में नहीं पूछा हुआ, उसने हमें कलर बता दिया था. सो पी इज़ कॉपर 2 सल्फेट हमें पता है क्योंकि ब्लू टू सम अदर कलर इज़ गोइंग टू बी मेड. सॉरी अबाउट दैट. एंड द सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ द कलर ऑफ एस. एस वो कलर है जो कि पिंक सॉल्ट का बनता है. ठीक है. तो हमने पिंक सॉल्ट एक ही तो पढ़ा हुआ है सिलेबस में, कौन सा? कोबाल्ट 2 क्लोराइड. और वो पिंक सॉल्ट क्या कलर देता है? इट गोज़ बैक टू बिकमिंग ब्लू. ओके, सो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है. तो हमारे पास ये सी आ गया. और ये दिस इज अ गुड रिविजन फॉर टेस्ट ऑफ वाटर. यू हैव कॉपर सल्फेट going from white to blue when you add water, and cobalt 2 chloride going from blue to pink when you add water. So यहाँ पर उनका opposite हो रहा है, but ये color changes आपको याद होने चाहिए. Magnesium reacts with copper 2 oxide to give magnesium oxide and copper. So you have magnesium reacting with copper 2 oxide. Equation बनाएंगे बहुत सारी चीज़ें clear हो जाएंगी. It's making magnesium oxide and copper. What does it show? It shows that copper has lost oxygen, magnesium has gained oxygen. इसका मतलब है copper oxide is the one that is providing this oxygen. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहता है, ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये कॉपर ऑक्साइड प्रोवाइड कर रहा है. तो आंसर तो ये है. इसके अलावा दिस क्वेश्चन शोज दैट magnesium is more reactive than copper because it has replaced it. इसके अलावा this reaction shows that this is a redox reaction. कैसे पता है? हमारे पास एलिमेंट है, जिस इक्वेशन में एलिमेंट आ जाता है और बाद में वो एलिमेंट नहीं रहता, that shows कि वो redox इक्वेशन है. I'm not saying कि उसके अलावा नहीं होता, but that is definitely redox. इसके अलावा ये रिएक्शन क्या शो करा रहा है? इसमें आपको कलर्स याद होने चाहिए. Copper oxide is black and copper is pink. Another thing you can remember is that magnesium oxide will be white because it's salt and it doesn't have any transition metal in it. So ये white color का होगा. Part of the periodic table is shown which elements form an acidic oxide. So acidic oxide are always the ones that are made from non-metal oxides. ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा. Non-metal oxides B ही हो सकता है क्योंकि D is noble gases. Noble gases तो reaction करते ही नहीं है. So B is the answer and this is probably carbon dioxide, that the one they're talking about.
When aqueous sodium hydroxide is added to a solution of metal ion, a grey-green precipitate forms. So sodium hydroxide, remember salt analysis, उसने grey-green solution बनाया which dissolves in excess to form a dark green solution. So there are two green precipitates in your syllabus with sodium hydroxide, chromium 3 and iron 2. And one of them dissolves, which is chromium 3. So that is our answer. The metal ion is chromium 3. और ये precipitate किसका होता है? Just so you know, it's the precipitate of hydroxide because that's the one that is made when it's added. तो इस ध्यान में रखिएगा that precipitate is the color of the hydroxide formed and it is showing the ion is chromium 3 because it dissolves. So दो टेस्ट हैं. First was the color test and the second was solubility test हमारे सामने आ गए हैं. Okay, so we have done half the paper and it seems like we have reached 1 hour. I'm perfectly fine with continuing if you guys are, but अगर किसी को जाना है, I know it's past your bedtime, so you guys can go and I will continue this, or we can just resume it tomorrow. So just let me know. Okay, which statement about strong acid are correct? Strong acid का मतलब है कि it's ionizing fully and acid का मतलब है that it's giving H positive. So this statement is wrong, H positive होना चाहिए. They have a pH value of 1. सब strong acids की नहीं होती लेकिन इसकी हो सकती है. There is a possibility that one might have. So sure, we can take this one out. They completely ionize in water. That is what strong acids mean. And they turn red litmus blue. It's the other way around. It's blue to red. So this is 2 and 3. Notice कि जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उस पर मैं लिख रहा हूँ. आप भी इसकी आदत बना लें. Alright, metal X reacts with non-metal Y. So metal है, non-metal है, ionic bonding होगी with the formula X2Y. What does it show? It shows Y has a negative 2 charge and X has a positive 1 charge or some multiple of 1 to 2. Okay, which statements are correct? X is in group 1 हो सकता है. X in group 2 ये नहीं हो सकता. Y is in group 6 ये हो सकता है because it has gained 2 electrons. So yeah. Y is in group 7 ये हो नहीं सकता. So there you go. This is just a ratio flip question. तो वो बड़ा simple सा है. We just calculated it. Okay, the table gives some properties of group 4 elements. Okay, we have carbon, silicon, germanium, all that. Which one describes the properties of silicon? So you have a trend here. और इस trend को आपने देखना है. You can see over here how this trend is changing. So just take an average value of these two and an average value of these two and you will have some way of figuring out कि कौन सा वाला इसका आंसर हो सकता है. ठीक है. So just take an average value of these two. ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सिलिकॉन इज़ अ नॉन मेटल. सो सिलिकॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती जर्मेनियम के रिलेटेड. इट्स अ नॉन मेटल मेटलॉइड. सो बहुत ज़्यादा इसकी डेंसिटी नहीं हो सकती. तो अगर आपकी एवरेज आपको कहती है कि 3 है या 3.5 है कुछ, उसको टेक दैट विद सम कॉशन. ठीक है. हो सकता है वो हो सकता है नहीं हो, बट इट शुड मैच द बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू दैट यू हैव. बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी इन दोनों के बीच में कहीं पे होनी चाहिए. बट सिलिकॉन एंड कार्बन में एक फ़र्क ज़रूर होगा दैट कार्बन हैज़ जाइंट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला. सो इतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट सिलिकॉन का नहीं हो सकता. श्योर सिलिकॉन ऑल्सो हैज़ अ जाइंट स्ट्रक्चर बट इट इज़ मच लोअर एज फार एज देयर बॉइलिंग पॉइंट इज़ कंसर्न. सो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज नहीं होती. सो टेक द वन दैट मैचेस फॉर बोथ ऑफ देम एंड गिव्स यू अ डिसेंट वैल्यू और वो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं यहाँ पे. आई डोंट थिंक इट कैन बी सी और डी क्योंकि वो तो कार्बन से ज़्यादा डेंसिटी के बहुत ज़्यादा डेंसिटी के हो गए, वो नहीं हो सकते. एंड सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा राइज नहीं कर सकता. इट्स गोइंग टू बी अ ट्रेंड इन अ ग्रुप. द मेटल बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. अब ये चीज़ आपको किसी ने बताई नहीं है और आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड गेट दिस इन्फॉर्मेशन इन द पेपर और ये इस क्वेश्चन तक आपको चाहिए. ओके. इट रिएक्ट्स विद HCl. सो ये कहना क्या चाह रहा है? इट डज़ नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. इसका मतलब है कि ये H पॉजिटिव को रिप्लेस नहीं कर सकता फ़ौरन. ठीक है. कोल्ड वाटर में अगर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता तो ये कर देता, अभी नहीं ये कर सकता. अच्छा, इट रिएक्ट हो सकता है हॉट करके कर लें लेकिन उसने कोल्ड बताया तो हम कोल्ड को देखेंगे. इट रिएक्ट्स विद HCl बट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाई यूजिंग कार्बन. इसका मतलब है ये कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है. क्यों? क्योंकि कार्बन अगर इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है. बट इट डज रिएक्ट विद HCl. क्यों? क्योंकि ये वहाँ पर हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गोइंग टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ दीज हाइड्रोजन आयंस. तो अब ये कहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे? अब इसमें आप ये ज़हन में रखिएगा कि कार्बन उसको एक्सट्रैक्ट अगर नहीं कर सकता, कार्बन के साथ रिडॉक्स नहीं हो सकता, तो कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है वो.
ठीक है। बट वी ऑल्सो नो कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है। सो हम यहाँ पर इसको कहाँ रखेंगे, मैग्नीशियम से ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है पानी के साथ और ये तो नहीं करता, सो इट शुड बी लोअर देन मैग्नीशियम एंड इट शुड बी अबव कार्बन। सो कार्बन कहाँ पर आएगा, ये ए पर आएगा क्योंकि जिंक कार्बन इकट्ठे होते हैं और मैग्नीशियम से नीचे होते हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी आवर आंसर। ओके, why is cryolite used in the extraction of aluminium from bauxite? Why is cryolite used? Cryolite is a source of aluminium, लेकिन वो reason नहीं है. Cryolite is used because it reduces the melting point, ठीक है। और वो कैसे करता है, हम उसमें उसको मिक्स करते हैं, ठीक है। एक मिक्सचर बन जाता है, मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, इट सेव्स अस एनर्जी। सो एग्जामिनर ने डायरेक्टली वो नहीं बताया क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चे याद करके आ जाते हैं इट रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट, कोई ऑप्शन डायरेक्टली रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट की नहीं है। लेकिन एज अ सॉल्वेंट की तो ऑप्शन है ना, तो सॉल्वेंट का मतलब है कि उसको मिक्स कर दिया तो इसका मतलब है कि हमारे पास उसने एज एन इम्प्योरिटी एक्ट कर दिया। देयर यू गो। विच स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ मेटल इज करेक्ट? ओके, सो आयरन यूज टू मेक एयरक्राफ्ट, नहीं भाई, इस वजह से इसको ज़रा चेंज कर देना, एल्यूमिनियम ऐड कर दें तो ही ठीक हो जाएगा। Okay, copper is used to make electric cable because copper is a good conductor. Yeah, that is true. Copper is a good conductor and that serves the purpose. So यहाँ पे देखें दोनों चीज़ें ठीक होनी चाहिए, the fact and the purpose दोनों मैच करने चाहिए। Aluminium is used to make brass because aluminium is strong and hard. Aluminium पहली बात है it's not hard and secondly brass में aluminium है या नहीं है ये आपको याद करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि brass में हमारे पास जिंक होता है, ठीक है, और साथ में कॉपर होता है। तो कॉपर एंड जिंक दोज आर द टू एलिमेंट्स मेनली दैट वी यूज टू मेक देम। ओके, इट्स परफेक्टली फाइन इफ यू आर टायर्ड, फील फ्री टू लीव एंड यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग और जॉइन अगैन टुमारो, इट्स परफेक्टली फाइन, डोंट वरी। ओके, सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और हमारे पास एक ही ऑप्शन है 2 and 4 बच गई, तो दैट इज़ गोइंग टू बी आवर आंसर। बाकी आप उसको देख सकते हो क्या है। Which road describes the reaction of magnesium hydroxide and magnesium oxide? Magnesium hydroxide and magnesium oxide. अच्छा देखते हैं। Magnesium, if you heat hydroxide, it forms magnesium oxide. ये बात ठीक है, ठीक है। उसकी वजह ये कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिलेशन याद रखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम ऑक्साइड बनता था ना, तो यहाँ पे मैग्नीशियम वाला भी वही करेगा। इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑक्साइड विद कार्बन, मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव और वो कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा कार्बन के साथ। मैग्नीशियम ऑक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना सकता क्योंकि वो मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। अभी हमने एक क्वेश्चन किया ना इसके ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज वाला, सो इसका मतलब है कि वी विल टेक बी एज द आंसर। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर लिस्टेड, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज क्वाइट हाई, मेटल हो सकता है, जाइंट स्ट्रक्चर हो सकता है, सम ऑफ इट्स कॉम्पाउंड्स आर कैटलिस्ट, डेफिनेटली ट्रांजिशन मेटल है, इट हैज़ वेरिएबल ऑक्सीजन, कंफर्म हो गया ट्रांजिशन मेटल है। वेयर इज द एलिमेंट फाउंड, ये लें जी। Petrol burns in a car engine to produce waste gases which leave through the car exhaust. Okay, we know about them. One of these waste gases is an oxide of nitrogen. दो oxides होते हैं nitrogen के, NO and NOx, NO2 sorry, and together they are called NOx. Nitrogen monoxide is neutral, nitrogen dioxide is acidic. Nitrogen dioxide और nitrogen oxide दोनों को catalytic converter nitrogen में और some oxide of carbon में convert करता है, carbon dioxide mainly. So one of these waste gases, which statement describes how it is formed? कैसे बनेगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विल रिएक्ट और कार इंजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, टेम्परेचर होता है, इस वजह से वहाँ पे रिएक्शन हो जाता है। तो दिस इज द आंसर, फैक्ट जो आपको याद होना चाहिए। ओके, जस्ट 10 क्वेश्चंस टू गो, गुड। विच कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल कॉम्पाउंड्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द फर्टिलाइजर शोन? NPK। अच्छा जी, तो बेसिकली उसने किया क्या है, उसने आपको रेशोज़ दी हैं, तो आप इनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालें और उनकी आप देख लें कि कौन सी रेशो बनती है। दैट्स इट, ऑल यू गॉट टू डू इज़ टेक आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ दीज थिंग्स एंड देन कैलकुलेट द रेशो, ठीक है। याद करने वाली इसमें कोई बात नहीं है। सो ऑल यू हैव टू डू इज़, क्या अच्छा देखें, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों होने चाहिए, पहली बात तो ये, उनकी रेशो हमारे पास 21-16-8 होनी चाहिए। अच्छा, पहली बात ये कि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों हैं, तो ये यूज़ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसमें तो तीनों नहीं है, पोटेशियम मिसिंग है, इसमें भी पोटेशियम मिसिंग है, फॉस्फोरस भी मिसिंग है, और इसमें हमारे पास
फॉस्फरस मिसिंग है। और ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान कर दिया उसने, तो ए इज़ द आंसर। Which process does not produce carbon dioxide? Let's see. Combustion of hydrocarbon will produce carbon dioxide. Steam, incomplete combustion will produce carbon monoxide and carbon. So यहाँ पे उसने incomplete नहीं बोला तो हम ये नहीं ले सकते. Photosynthesis actually uses the carbon dioxide. So this is not the answer. This is the answer. It does not produce carbon dioxide. With carbonate, you know that acid will break the carbonate and it will give off. पहले वो कार्बोनिक एसिड बनेगा और फिर वो ब्रेक डाउन करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. रेस्पिरेशन, यू नो दैट इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. सो बी इज द आंसर. विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज ब्लीच इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर? SO2. ऑप्शन देखे बगैर पता होना चाहिए, ठीक है. क्यों? फैक्ट है. फैक्ट्स आपको याद करने. वी हैव स्पेंट 4 लेसन्स ऑन दिस. गो थ्रू दोज 4 रिकॉर्डिंग्स इफ यू नीड टू. फैक्ट्स याद करने. What is the industrial use of calcium carbonate? Again, एक फैक्ट का क्वेश्चन आ गया. इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है? बहुत सारे यूजेस हैं. कैल्शियम कार्बोनेट का एक यूज़ ये है कि इट इज़ यूज फॉर डीसल्फराइजेशन, ठीक है. एक और यूज़ है इट्स मैन्युफैक्चरिंग. सीमेंट, ओ लेवल्स वालों को ये वाला यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है. IGCSE पीपल नीड टू नो दैट इट्स यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, बट ओ लेवल पीपल जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट इट्स यूज इन डीसल्फराइजेशन. IGCSE वालों के लिए दोनों ज़रूरी हैं. ओके, प्रोपेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन. ओके, विच कौन सा रिएक्शन होगा? सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एल्केन है, ठीक है, और क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा. इसमें हमें अल्ट्रावायलेट लाइट ज़रूर चाहिए होगी. अच्छा जी. विच वन शोज अ कंडीशन रिक्वायर्ड? सो अल्ट्रावायलेट लाइट वाली ऑप्शन पिक कर लें. ओके, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन. देयर यू गो. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपको फैक्ट्स याद हैं, आपको ऑप्शन देखने की अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. सो दैट इज़ वाई आई स्पेंड 4 full-fledged lessons on facts. You need to go through them, you need to memorize them. उनको लिखें, उनको एक दूसरे से डिस्कस करें. That is how your mind will retain them. Otherwise, on average, people forget 40% of what they learned in just one day and they have forgotten the whole thing in 10 days. ठीक है, तो I'm not scaring you, I'm just saying कि इसको revise करें, discuss करें. The pie chart represents the composition of natural gas. We know natural gas has the highest component, the highest available component there, that is methane. Almost 96%. याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो that is D. इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है. Again facts. देखें 4 क्वेश्चन हमारे पास facts के आ गए डायरेक्टली. Which statement describes the reaction between ethene, alkene है, और steam? High temperature है, जो कि 300 डिग्री सेल्सियस होता है. फॉस्फोरिक एसिड कैटलिस्ट होता है. IGCSE पीपल नीड टू रिमेंबर दैट. ओ लेवल्स पीपल जस्ट नीड टू रिमेंबर कि एसिड होता है, ठीक है. तो दिस इज एडिशन रिएक्शन. ये सारी बातें आपके माइंड में दीज कनेक्शन शुड लाइट अप व्हेन यू सी अ क्वेश्चन लाइक दिस. ओके, व्हाट्स हैपनिंग हियर? इट्स एन एडिशन रिएक्शन, यस, विच प्रोड्यूसेस एथेनॉल एज द ओनली प्रोडक्ट. लेट्स सी, कोई और आइसोमर तो नहीं बन सकता. ईथीन में हमारे पास 2 कार्बन है. मैंने आपको बताया था कि 2 कार्बन में हमारे पास आइसोटोप नहीं बनता. 3 में आइसोटोप नहीं बनता अगर एल्कीन या एल्केन हो. एथेनॉल में एल्कोहल में 3 में बन जाता है, 2 में नहीं बन सकता. सो या दिस इज द आंसर. वेट अ मिनट. या इट इज एडिशन, इट ओनली प्रोड्यूसेस दिस. यस. Formula for hydrocarbon is CXHY. The equation is this. What are the values of CXHY? बहुत सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, और कोई सोर्स ऑफ कार्बन तो है नहीं ना यहाँ पे. सो दैट मीन्स इट्स C5. ओके, हाइड्रोजन कितनी है? यू कैन सी दैट यू हैव 12 हाइड्रोजन हेयर एंड देर इज नो अदर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन. सो C5H12, दैट इज आवर आंसर. प्रिटी सिंपल. ऑक्सीजन इज like irrelevant here, we don't need to look over there. फॉर्मूला ऑफ एन एस्टर. अब इस पे परेशान नहीं होना, सिर्फ COO को देखें कहाँ पे. इसका मतलब है कि दिस पार्ट इज़ कमिंग फ्रॉम द एल्कोहल, दिस पार्ट इज़ कमिंग फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड. अब इसमें देख लें 1 2 3 4 हैं आपके पास. एसिड में 4 होने चाहिए, सो ब्यूटानोइक एसिड. और एल्कोहल में, अच्छा इसमें आपने इस कार्बन को भी ऐड करना है, नोटिस दिस. और यहाँ पे यू हैव 3, so that is going to be propanol, so that's our option. ठीक है, दोबारा से देख लें. you need to first identify कि लिंक कहाँ पे है, so that is COO. then you need to see कि आपके पास ऑक्सीजन के साथ जितने लगे हैं ये अल्कोहल से आएंगे और बाकी जितने लगे हैं ये एसिड से आएंगे. so you have 4 from the acid and 3 from the alcohol.
Second last question, we're almost done. Molecule 1 undergoes a process to make molecule 2. ना हमें पता molecule 1 कौन सा है, हमने सिर्फ मैच करना है उनको. Which row describes the molecules and the process? Okay, monomer से polymer बनाना है, polymerization होनी चाहिए, ये नहीं ठीक. मोनोमर से पॉलीमर बनाना है, पोलीमराइजेशन होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है. स्मॉल मॉलिक्यूल से मोनोमर बनाना है, स्मॉल मॉलिक्यूल इज़ मोनोमर. सो ये आई डोंट नो वो ये कहना क्या चाह रहे हैं. स्मॉल मॉलिक्यूल से मोनोमर बनाना है, नहीं भाई. क्रैकिंग ब्रेक्स डाउन लार्ज मोनोमर्स, लार्ज कॉम्पाउंड्स इनटू स्मॉलर वंस. उनको आप मोनोमर बोलो, स्मॉल मॉलिक्यूल बोलो. उसका एक यूज़ है कि इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन, इट प्रोड्यूसेस स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट वी नीड एज फ्यूल, दैट वी नीड फॉर फीड स्टॉक फॉर केमिकल इंडस्ट्री, दैट वी नीड फॉर मेकिंग यूजिंग एज एल्कीन्स. तो क्रैकिंग के बहुत सारे यूजेस हैं. यू नीड कैटलिस्ट, यू नीड हाई टेम्परेचर. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. बी इज़ द आंसर. लास्ट क्वेश्चन. ओके, विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स अ प्रोटीन. प्रोटीन जैसे ही जेन में आया आपको एमाइड लिंकेज जेन में आनी चाहिए, या पेप्टाइड लिंकेज. उसका प्रोटीन में तो पेप्टाइड नाम है, नाइलॉन में एमाइड नाम है. और दैट इज़ द ओनली मोनोमर इन योर सिलेबस दैट हैज़ नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर है. अब देखते हैं कि इनमें से कौन से वाला प्रोटीन हो सकता है. अब मैंने आपको बताया था कि नेचुरल में स्विच करता है और वहाँ पर CN लिंक होता है, ठीक है. और जो आपके पास सिंथेटिक हैं उसमें स्विच नहीं करता, तो CCNN इस तरह से लिंक बनता है हमारे पास. सो यहाँ पे देखें ज़रा, NCNCNC, दैट इज़ स्विचिंग, राइट. सो दैट इज़ प्रोटीन नेचुरल. CCNNCC, दैट शोज दैट दिस इज़ मैन मेड, ये स्विच नहीं कर रहा है, ठीक है. सो दिस इज़ एमाइड लिंकेज, दैट इज़ पेप्टाइड लिंकेज. हमें पता है कि इसकी एग्जांपल प्रोटीन होगी, इसकी एग्जांपल नाइलॉन होगा. ये किससे बनेगा? एमाइनो एसिड से. ये किससे बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड सेपरेट, जो उसमें डाई कार्बोक्सिलिक होगा, और एमाइन सेपरेट, डाई एमाइन. सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस. सिंस वी आर ऑन दिस टॉपिक, इस लिंकेज का नाम होता है एस्टर, इस लिंकेज का नाम होता है नाम इसका ईथर है, लेकिन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं. जस्ट रिमेंबर कि ये हमारे पास टेरेलिन में होती हैं, ये हमारे पास फैट्स में होती हैं, ये लिंकेज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में होती हैं. सो जस्ट अ फ्यू फैक्ट्स you need to remember about these, and that concludes our discussion on this paper. Thank you so much for attending. I will just have a look at if you have any questions. Okay. Oh, I'm sorry if you could not see the question. That should be visible now. What alloys we are supposed to know the composition of? So just know about steel, brass, and there's one more, I'm forgetting the name. It's very common, it's used. Common alloys, let me just search it. अजीब बात है, भूल गए. So there is स्टेनलेस स्टील, उसमें आप लोग पता होना चाहिए कि यू हैव आयरन कार्बन. स्टील में तो आयरन कार्बन दोनों होते हैं, बट उसके अलावा आपके पास उसमें क्रोमियम ऐड करते हैं, सो इट डजंट रस्ट. And then we have brass, and then bronze. Bronze has copper and tin in it, and brass has zinc and copper in it. ठीक है, तो दोनों brass and bronze both have copper, and bronze has tin and brass has zinc. ठीक है, so those are the ones you need to know about. All right, any more questions? Thank you so much for attending. I'll see you in class tomorrow. If you have any questions, feel free to send them to the group or to me. Allah Hafiz.